On behalf of Shri Badikashram Emerging Youth Scholarship and Mentorship Scheme, I welcome you all the students, the teachers and mentors who are today part of this session. The teachers who are here, the 10 teachers will be taking you through this program of Foundation English and Communication Skills. They are highly experienced teachers. They have been teaching international students, Japanese, French, Russian, and Portuguese students, and so many students from so many other countries in English language. Highly esteemed and experienced teachers, and they have worked really very hard to prepare this program for all of you, because our objective was to start from the Foundation English. जो foundation से start करके उसको धीरे-धीरे grow करके आपको इस level तक लेके जाना है 6 months में, कि at the end of 6 months जब भी आप program complete करेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर भी होंगे और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका एक अलग लेवल पे होगा। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 6 मंथ्स के प्रोग्राम को सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो आपके जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो लेवल होगा वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट से कहीं बेहतर होगा इंडिया, क्योंकि हम लोगों को ये ऐसा प्रोग्राम कभी मिला नहीं। जो भी हमने सीखा वो अपने आप से हाथ पांव मार के इधर उधर सीखा, पर आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया हमारे टीचर्स ने, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो पढ़ा रहे हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वो किस लेवल के टीचर्स हैं। यूजुअली जब वो पेड क्लासेस लेते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो एक क्लास के लिए 100 सिंगापुर डॉलर इसके आसपास होता है, यानी कि 5000 रुपीज वो एक क्लास के लिए लेते हैं। तो अगर आप इस पूरे 6 मंथ्स के हर एक सैटरडे वीकेंड में जो हमारा क्लास होगा उसको कंसिडर करेंगे तो इस प्रोग्राम की वैल्यू 1.3 लाख रुपीस फॉर वन स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट के लिए 1.3 लाख की जो वैल्यू का जो प्रोग्राम है वो आपको हेल्प करने के लिए हम लोग फ्री दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसका कितना वैल्यू है और कितना इंपॉर्टेंस है, और आप देखेंगे कि आपको इस लेवल पे ये बेनिफिट करेगा कि लाइफ में जब हमको सक्सेस की हम बात करते हैं तो ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है सक्सेस। सबसे पहला तो जो आपका स्किल है, स्किल लेवल है। आप सब लोग अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, पर आप सबके लिए जो आपके अपनी फील्ड में जो स्किल है वो पहली चीज है। जो दूसरा आपका सक्सेस डिपेंड करता है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, कि आप जो भी कहते हैं या जो बात कर रहे हैं उसको कितना पावरफुली और कितनी थ्रो के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो आपकी सक्सेस का जो सेकंड पैरामीटर होता है वो आपका कम्युनिकेशन। Ashu's net has dropped, it seems. Sorry, you are not audible now. Yeah. Sonali, can you hear me? Yes, we can. Yes, I can hear you, Rashmi. And I still don't have the host controls. Let me call Ashutosh. Just bear with us for 1 or 2 minutes. There seems to be a transmission loss from Ashu's side. We're getting in touch with him. Sorry. मैं अभी इसको ट्रांसफर करता हूँ सोनाली जी को, जो कि हमारी प्रोग्राम की एक सीनियर टीचर हैं, एंड शी विल स्टार्ट द सेशन। Sonali ji, you have the host right now. Okay. Thank you so much, Ashutosh. Now I'll first share the presentation with you all, and from here on आप आगे का सेशन रश्मि मैम लेंगी। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। क्या सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. सबको विजिबल है? Yes, ma'am. Okay. रिकॉर्डिंग ऑन पर चेक कर लीजिए सोनाली मैम। Yes, I'll check it. Yes, it's on. It's on. Yes, recording is on. ठीक है। और यहाँ से रश्मि मैम मैं आपको देती हूँ प्रेजेंटेशन, आप लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सोनाली। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है SBA फाउंडेशन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू SBA फाउंडेशन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन फॉर स्टूडेंट्स। So it's a very important day for all of us. We have spent some time developing this course for you.
So we've been working for the past 3 months. पिछले 3 महीने से हम ये course आपके लिए design कर रहे हैं. So I can really tell you that it's a very, very happy and joyous moment for all of us, because a class is really not a class till the students enter it. एक क्लासरूम जो है, कक्षा जो है, वो एक सिर्फ कमरा भर रहता है जब तक कि वहां पर विद्यार्थी नहीं आते हैं. तो ये इम्पोर्टेंस शो करता है कि एक विद्यार्थी का होना कितना जरूरी है एक कक्षा के अंदर. तो इस प्रेजेंटेशन में what we intend to do is to highlight the importance of language and highlight the importance of English language in particular, and we'll also show you the things that you would learn through this course. तो इस प्रेजेंटेशन में आप जानेंगे कि लैंग्वेज की, एक भाषा की महत्वता क्या है, अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है, अंग्रेजी आपको किस तरीके से मदद कर सकती है, और इस कोर्स के जरिए आप क्या क्या सीख पाएंगे. Can we go ahead, please? All right, so let's begin by meeting our teachers. All of them are here. I would, maybe you can just say a hi to the students. They would be very enthused, you know. So Miss Kavya Ankalekar, she is one of our teachers. Miss Kavya, can you say hello to the students? Good morning, children. My name is Kavya Ankalekar, and I'll be teaching English to you. Yeah. So looking forward to it. आप सबको मिलने की इच्छा है और सब मिलके हम लोग इंग्लिश सीखेंगे. Thank you so much, Kavya ji. Thank you. Since we are really pressed for time, I would just request all of you to say a quick hello to the students. Miss Malini Bharat, are you there, Miss Malini Bharat? Yes, hi. Hi, children. Happy that you're all joining in for the course. Thank you. Thank you so much. Miss Manjula Bains. Hello everybody, and lovely to have you here, and looking forward to being with you. Thank you. Thank you so much. Miss Priya Raghuvaraman, do we have you in the call? Miss Priya. All right, I'll quickly go ahead. Miss Ria Raj. Ria, are you there in the call? All right, I'll move then to Sonali. Sonali? Hi everyone. A very good morning and looking forward to see you soon. Thank you so much, Sonali. Miss Shri Vidya Sridharan. Hi all. Very excited to meet you all soon. Best wishes. Thank you. Thank you so much, Miss Shri Vidya. Miss Sonu Dabral. Sonu, do we have you in the call? Hello. Yeah. Am I audible? Yeah, you are. Please go on. Hi, everybody. Good morning. And wish you all the best. All of us are together in this. Thank you so much. They do need that encouragement. Miss Tahira Kisna. Tahira, if your Wi-Fi is working, maybe you can say a quick hello. Hello. Can you see me? Yes, hello? Yes, we can. Go on. Yeah. Hello, everyone. So see you all very soon. Very excited. Thank you so much. And my name is Rashmi, and I would walk through some part of the presentation. Please, let's move to the next slide. All right, let's begin on a happy note. Here are a few sentences in front of you. Can you identify if there is anything wrong, off in these sentences? थोड़े से वाक्य मैंने लिख दिए हैं इस presentation में, आपके सामने हैं. अगर आप चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आप chat box पर भी लिख सकते हैं. And you can let us know what is wrong with these sentences. The first preference would be given to the students. Let's eat grandma. Anything wrong with that? Let me see the chat box. Nothing is coming on the chat box. Let's not be shy, please. Let's go on. Look at these. Let's eat grandma. Anything wrong with that sentence? She did not accept my wishes. She did not accept my wishes. Accept my wishes. Thank you. Thank you so much, Ali. Yeah. And the spelling of accept. Yes. So what should be the spelling? It's wrong. Yeah. Gandhali says ACCEPT. Yes, there should be ACCEPT. So similar sounding words, but the spelling is completely wrong. Here we need an accept with an A and not an accept with an E. पहले वाले sentence में let's eat grandma अगर मैं बोल देती हूँ तो I literally eat grandma. Please mute yourself.
I request. Mute. I request all the participants to mute themselves. Yes, I could hear a lullaby in the background. Okay, we are going to learn to cut and paste kids. We are going to learn to cut and paste kids. Look at how some mistakes here and there are completely changing the meaning of these sentences. Anybody who would want to respond to that? Comma is not there in the first sentence. Yes, Parul, you're absolutely right. Comma after kids. Okay, comma after kids, but there is a period already there. We need a comma before kids. We are going to learn to cut and paste kids. It's an instruction. आप बता रहे हैं कि हम कट एंड पेस्ट करना सीखेंगे बच्चों. तो बच्चों से पहले एक कॉमा आएगा, किड्स से पहले एक कॉमा आएगा. Their car broke down on the highway. Their car broke down on the highway. Look at that sentence. They're not there. Yes, thank you, Sonu. Comma after kids. Okay, some children have also begun to respond. Some learners have also begun to respond. I really, really appreciate that. Please go on. आप भी participate करिए. आता है, नहीं आता है, सही है, गलत है. But the idea is to just play the game. Let's examine the root of this mistake. Harsh says it should be THEIR and not THERE. Yes, you're absolutely correct, Harsh. Root, Sakshi says it should be root and not ROUTE. Yes, absolutely correct. Himanshu, you're right. Yeah. Tables are for eating customers only. Look at the sixth sentence. Tables are for eating customers only. Do you see anything off there? Eating customers or for the eating of customers? Eating customers or tables are for eating customers only. So it seems as if the tables are going to eat the customers. Okay, Sonu says that you can put a comma or it can be tables are for the customers who want to eat, who wants to want to sit down and eat. You know, there has to be more information there. Okay. All right, thank you. I enjoy cooking my family and my pets. I enjoy cooking my family and my pets. Look at the cruelty of it. I enjoy cooking my family. मुझे अपना family को cook करना और मेरे pets को cook करना पसंद है. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि family और pets को आप cook कर रहे हैं. I enjoy cooking. All right, nobody has given me the right answer for that. For my family, with my family, cooking for, okay, really thrilled with the responses that I'm receiving. With my family, okay, but what about, okay, what if, let me give you one hint. What if these are three hobbies, then how do you separate? Okay, Sonu at least uses one comma. So it's a comma discrepancy. Ye comma ki galti hai. I enjoy cooking with my family. And I enjoy my pets. Either it should be like that. I enjoy cooking, my family, and my pets. That could also be the right answer. Thank you so much. So let's move to the next slide. Before that, please, one slide before this. All right. So in what ways do you use language every day? हम लोग को सबको पता है कि India is a land of languages. You know, it's sometimes very difficult to count the number of languages that India has. हमारे constitution में एक certain number of languages दी गई हैं जो कि which are you know the languages of different states. लेकिन उसके अलावा भी इतने सारे dialects हैं, हिंदी के ही इतने सारे dialects हैं. हर 10 किलोमीटर पे हर थोड़े देर पर हमारी language change होती रहती है. So we really are a land of languages. Can you think of different ways in which people say hello to each other in different languages in India? Let's hear you out. Different ways. Sat Sri Akal, yes. That's one. Khamma Ghani is another. Ram Ramji is another, yes. Namaste, Jai Jai, yes, yes. Yeah. Jai Shri Krishna, very, very common in Gujarat. Hari Om, yes. In our ashram, we say Jai Shri Hari or Om Shri Hari. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Salam, yes. Vanakkam, Shri Vidya ji says Vanakkam.
Yes, thank you so much. So yeah, all of these are different ways in which people greet each other. Saiji is another one, which is used by Parsi community. They say hello to each other by saying Saiji. Jule is another word used by Ladakhi community. Then yeah, salam, आदाब अर्ज़े. So ये तरीके हैं अलग अलग तरीके से लोगों को ग्रीट करने के. जो ये पर्टिकुलर एक स्लाइड आपके सामने है, you can see different ways in which people greet each other across different countries of the world. So hola, salut, then bonjour, hello, hi, so ciao. These are different ways in which people say hello to each other. And we realize that the desire to talk to each other, the desire to communicate, एक दूसरे से बात करने की जो हमें ललक है, एक दूसरे से communicate करने की एक जो इच्छा है, that's an innate human need. You know, it's an innate human need. It cuts across all nations. It cuts across languages. You know, if you put two children of different nationalities together, even without understanding their languages, they would talk. You know, they would use non-verbal communication skills. They would, they would use their gestures, but they would be able to communicate with each other. So communication is an important, very important part of, being human. Let's go on. All right, there are 4 of these pictures in front of you. और ये पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं कि लैंग्वेज को किस किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रयोग में लाते हैं. आप ये चारों फोटोज को देख सकते हैं और फिर अपने रिस्पॉन्स या तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे हमें बताने के लिए कि लैंग्वेज को किस किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट वी यूज इट फॉर कम्युनिकेशन. एक संचार के तरीके के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. व्हाट आर द अदर वेज इन व्हिच वी यूज लैंग्वेज? व्हाई डू वी यूज लैंग्वेज? ये सोचा जा सकता है ऐसा कि लैंग्वेज खाली जिसने भाषा को एक ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो या पोस्ट ग्रेड लेवल पे पढ़ा हो उसी को भाषा में इंटरेस्ट होगा, पर ऐसा है नहीं. क्योंकि to express our thoughts, yes, I'm just reading out the responses from the chat box. To express thoughts, for expressing needs and emotions, thank you, Sonu. To exchange ideas, yes. To communicate with anyone, yes. These are the different ways in which we use language. Now, we might think that, oh, I'm a science student, I don't need to use language so much. But then you pick up any subject, any stream, and your language would be your underlying factor. It would be the underlying requirement, for studying anything, for understanding anything. To understand another person, yes. To help others and to ask for help when in need. To express thoughts and feelings, yes. So this is what we arrive at. Express thoughts, opinions, ideas. अपना मत दिखाने के लिए, अपना एक विचारों के आदान प्रदान के लिए हम language को use करते हैं. We share stories, knowledge, and feelings. Now, this is very important. As humans, we share stories all the time. Now, you might disagree with me, but then let me tell you, when you call up a friend and you're telling your friend कि आज दिन में कॉलेज में ये हुआ, ये मुझे मिला, वो मुझे नहीं मिली, टीचर ने ये वाला लेसन बहुत अच्छा पढ़ाया या हमको बिल्कुल बोर कर दिया, you're actually telling a story. When you go back home and when your mother asks you how your day was, you are actually telling a story. So that's how innate, that's how important stories are and language is to our life. Inform and instruct, formal communication. जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब आप लोगों से किसी जॉब की वजह से या मान लीजिए आप अपना वाइवा भी दे रहे हैं, उस वक्त यू आर इन अ फॉर्मल सेटअप जहां पर आपको भाषा को एक अलग तरीके से यूज करना है. एक भाषा वो है जो आप बहुत इनफॉर्मली एक फ्रेंड के साथ यूज करते हैं, दूसरी भाषा वो है जो कि आप एक ऑफिशियल सेटअप में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन वाले
वाले सिनारियो में यूज करते हैं। तो दोनों भाषाएं बहुत बहुत अलग हैं। लर्न न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड पर्सपेक्टिव। भाषा आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाती है, आइडियाज सिखाती है, आपको जिंदगी के अलग अलग पर्सपेक्टिव शो करती है। तो आप जब जैसे कोई नॉवल उठाते हैं और आप उस नॉवल को पढ़ते हैं, उस वक्त नॉवल पढ़ते वक्त you get into the lives of the characters that you see in the novel. You meet a different world. For example, when you pick up Harry Potter, जब आप हैरी पॉटर उठाते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, एक अलग ही तरीके के लोगों से आपकी मुलाकात होती है. Similarly, if you pick up a novel, say from France, then you are meeting a society which is very different from yours. आपके समाज से बहुत अलग समाज है वो. तो वो समाज कैसे रन करता है, वहां पे क्या आइडियाज है, ये सब आपको पता चलता है. You enjoy conversations, meeting people, movies, songs, and become a part of a community. लैंग्वेज आपको अलाउ करता है कि आप दूसरों की बातों को समझ सकें, आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर भाषा में लिखे हुए गानों को, मूवीज को अप्रिशिएट कर सकें. You progress, live comfortably because it allows you to communicate effectively. You gain success in professional life, you build meaningful relationships, and most importantly, language is an entry point into any culture. Now, this is a very important point. आप सोचिए कि अगर आपको किसी भी कल्चर को समझना है, तो उस कल्चर की भाषा को अगर आप समझ गए, तो वो कल्चर आपके लिए समझना कितना आसान होगा. अगर दिवाली मुझे अप्रिशिएट करनी है, अगर मुझे ईद अप्रिशिएट करनी है, तो अगर मैं हिंदी, उर्दू या ये भाषाएं समझ पाऊं, तो मैं कितने गाने या कितनी वो भाषा उस एक फेस्टिवल का मूल है, तो वो मुझे अलाउ करती है कि मैं उस संस्कृति को समझ सकूं. So that's how language is important. Let's go on. Yeah, just before that, can we move before that? Yeah. तो लैंग्वेजेस को, भाषाओं को हम दो तरीके से बांट सकते हैं. एक है फर्स्ट लैंग्वेज, विच इज ऑल्सो नोन एज मदर टंग. हिंदी में हम बोलते हैं मातृभाषा. वो भाषा जो आपने बड़े होते वक्त अपनी फैमिली में, अपने परिवार में सबको बोलते सुना, माँ को बोलते सुना, और वो भाषा आपका हिस्सा बन गई. वो भाषा आप ऑटोमेटिकली सीख गए, किसी ने आपको सिखाई नहीं वो भाषा, वो खुद ही आप सीख गए, बिकॉज यू वर बॉर्न इनटू दैट कल्चर. सो in that case, for you, Hindi or Himachali or Urdu would be your mother tongue. For example, my mother tongue is Hindi. Nobody had to teach me Hindi, but because everybody in my immediate environment, मेरे आसपास सब लोग हिंदी बोल रहे थे, तो मैं हिंदी सीख गई उस तरीके से. सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, इसको हम द्वितीय भाषा भी बोलते हैं. सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि आप लाइफ में बाद में सीखते हैं, और ये लैंग्वेज आप यूज करते हैं, इसको आप प्रयोग में लाते हैं हायर स्टडीज के लिए, आगे पढ़ने के लिए, या फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. आपको इंटरव्यू देना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको ऑफिस में वर्क करना है. एक मान लीजिए मल्टीनेशनल सेटअप है जहाँ पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं. इंग्लिश then becomes the link language, you know. So your second language, in this case, English happens to be your second language, not your first language, but your second language. लेकिन ये घबराने की बात नहीं है. Even my first language is Hindi and my second language is English, you know. लेकिन ये जरूर होता है कि करते करते आप इतने लेवल पर पहुंच जाते हैं, आप इतनी उसके अंदर इतना क्या मुझे बोलना चाहिए, दक्षता हासिल कर लेते हैं कि वो लैंग्वेज भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जैसी ही बन जाती है. तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है. मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ. टिल ग्रेड 8 I was good at English, but I was not very good. But it's all about willingness, it's all about motivation. आप अगर तैयार हैं, अगर आप willing हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है.
तो घबराइए मत, कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक स्किल है, एक दक्षता है जो कोई भी किसी भी उम्र पर हासिल कर सकता है. इट इज नॉट हेरिडिटरी. नाउ आई कांट एम्फसाइज इट मोर. इट इज नॉट हेरिडिटरी. ये अनुवांशिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में पहले किसी ने इंग्लिश नहीं सीखी तो आप नहीं सीख पाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरी फैमिली में हिंदी ही बोली जाती थी एंड आई वाज एबल टू लर्न इंग्लिश. आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं, धड़ल्ले से सीख सकते हैं. इट कैन बी लर्न्ड एनी टाइम इफ यू आर विलिंग. सो विलिंगनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. There is no age bar. I know people who've learned foreign languages after they were 60. You know, some people started after retirement. So language के लिए कोई भी age bar नहीं है. किसी भी उम्र पर language सीखी जा सकती है, and it gets better only with practice. जितना practice आप करते रहेंगे, उतनी आपकी भाषा सुधार आता रहेगा, उतने आप ज़्यादा proficient होते रहेंगे. Okay, I've spoken a lot and I hope I've not taken too much time. With that, I hand it over to the next speaker, who's Miss Manjula Bains. Thank you, Rashmi. That was really very enriching and very enlightening. मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा. सबको ही बहुत अच्छा लगा होगा. तो वो वरी सुन के मैं अपनी वरीज को सोचने लग गई कि मैं कितना वरी करती थी जब मेरी बारी थी. You know, so little bit background for everybody. I mean, I've come back to India after about 25-26 years. So when we first moved to Malaysia, then onwards to Singapore, so the way in which I spoke English was very different. It was Indian English. So I had to unlearn that and practice something and learn something which is called standard English, ताकि ये सारे दुनिया के लोग जिस तरह से बात करते हैं वो मुझे भी समझ सकें. तो मुझे भी ये 40 साल की उम्र के बाद मुझे भी ये मेहनत करनी पड़ी थी. अब इसको सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, 26 साल के बाद जब वापस आ गए तो अब हिंदी का फ्लो भूल गया. तो इंग्लिश जो मेरा स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो मेरे सिंगापुर का उपहार है मेरे लिए, और जो हिंदी है वो मेरे 5 साल से हिमाचल प्रदेश जाने का उपहार है. So that is my background about learning Hindi and about learning English. So we have to keep learning, we have to keep going, we never stop, because the world is open for you and you will only enjoy if you have language. So may I just ask you a question? How many countries, before we go on to the lingua franca and all the heavy metal stuff, एक chat box में मुझे बताइए हमारे संसार में कितने देश हैं? How many countries are there in the world? Approximately. Come on, there. You'll get a color television from me if you give me the right answer. Come on, guess. Vibhuti, that's very good, very close, 197. So we'll give the first prize to Vibhuti, okay? The fictitious first prize. It's about 197, no, 195. Yes, very good, excellent. So this is a very well-informed audience we have here, you know. And now can you tell me, how many countries actually speak English as their first language? कितने देश हैं पूरे संसार में जो अंग्रेजी को अपनी पहली मातृभाषा की तरह बोलते हैं? कितने देश होंगे? I'll repeat my question. How many countries actually speak English as their first language? Don't do Google search. How many? 2? Maybe more, Sonali. How many? Guess some more. 70, 80 is too high. 50 is very high. 3 is too low. 59, Ariva is too high. 45 is too high. Okay, let me just close this here and give you the answer. It is about, who said Shalini Bhatt? Okay, we'll give the second prize of the fictitious color television to Shalini. She says 20. It's about 19. So 19 to 20, you can say. Okay. And so so I'll just recap what I said. There are about 195 countries in the world, and out of which only 19 speak English as their first language. So where does India stand, or where does India figure in all this? Where do we Indians stand in the figure, in this entire ratio? So you'll be very surprised to note, or probably you already know, that India is the second largest English speaking country in the world. Okay. So we are nowhere, we are not even a native speaker, but we are the second largest English speaking country in the world. So what is the importance of English in the world today? How did it arrive into India? How did we start? How did we
get about learning English and doing work in English and giving so much importance to English? Why is so much prestige attached to learning this language in particular? Why? So as you know, I mean, we've all been through these stories of independence. So 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी, उसके पहले हमारा देश के साथ क्या हुआ था? यूके एक colonial power बन गया, और उसने United Kingdom came into India, and English rose to power as a common means to communicate and to work. And many countries, including India, became a colony of the British Empire, and therefore English arrived in India too. So English naturally became the lingua franca of this part of the region. So there can be many lingua francas. We are only talking about English as a lingua franca at the moment. Okay, there are many rising lingua francas happening in the world for businesses, but we are only talking about English. So lingua franca, or as Rashmi ji said, a link language, it is basically any language, and in this case, English, that has been adopted as a common language between various speakers whose native languages or first language is different from the language being learned. Okay, so there's a very interesting fact that I would like to share at this point, that I told you I've come back from Singapore, and it is to be noted that those who've been to Singapore will know this, that it's a country which is not bigger than the size of our New Delhi. Okay, not bigger than the size of New Delhi. It has already not one, not two, not three, but 4 official languages. So they have Chinese, which is Mandarin. They have Malay, which is Bahasa. Interestingly, they have Tamil and they have English. Now there are 4 languages. So how do they work? How do they live? How do they study? So therefore, English has been chosen as a lingua franca, or the medium to study English. Okay, in all subjects. All the subjects are taught in English there, and all the administrative processes or the government works are also done in English. So just think, how do we live peacefully? How do we live and work efficiently? Not only in India, but anywhere else in the world. How do we communicate effectively and make information exchange possible? Therefore, the importance of English as a lingua franca for all of us, and especially you students now who are going to step out into the future. So now you will appreciate that the knowledge of English will prepare you for living anywhere in the world, and especially working anywhere in the world, or at least in most countries. You will be able to get along well with people. You will be able to understand the work process. You will be able to understand and deliver what you have signed up for. And thirdly, everybody does a search engine these days. We are on search engines. Almost everybody goes on a search engine at least once a day. We are searching. So is that right? We search content on the internet. हम internet में ढूंढते हैं, search करते हैं, तो सब कुछ अंग्रेजी में आता है, right? Therefore, the importance of English again. And for you students especially, all your higher education knowledge in any subject is primarily available in English. So a good grip on English is going to enable knowledge acquisition for you. आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उससे अपने पढ़ाई का, अपने सोचने का स्तर, अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ से आए हैं हमें वैसे ही रहना है, उसको भी साथ लेके चलना है आगे. That is the point of learning. Okay? And you're going to soon be in jobs. Most of you, give you maybe anything between 2 years to maybe 3 years. All of you will be working. You will be the future. So your jobs are going to require a good command of spoken English. How you're going to present yourself is a reflection of who you are. What are the circumstances that have molded you? आपकी जिंदगी में क्या क्या उतरा, वो आपकी भाषा से पता चलेगा. तो अगर आप अंग्रेजी अच्छे से बोलेंगे, स्वीटली बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे, ठीक से बोलेंगे, जिस तरह बोली जाती है, जरूरी नहीं है कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग हो, मगर ठीक से बोली जाए, तो ये इससे आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, सब आपको पसंद करेंगे और आप अपने नौकरियों में भी खुश रहेंगे और सफल रहेंगे. Okay, I hope you're feeling better now.
and a little bit more confidence. So I want to hear from you. What are your challenges? ये शब्द बहुत बड़ा है. Challenge, मुसीबत, worry, आफत. तो challenges basically वो बेड़ियां हैं जो किसी इंसान को रोकती हैं. तो हम अभी अंग्रेजी को सीखने की बात कर रहे हैं. अंग्रेजी आपको ऑलरेडी आती है, आपने स्कूलों में सीखा है. So we are not disregarding that you don't know English. You are not with zero English. You already have a certain level of English. We are only going to help you further it and better it and make it more marketable, make it more easy, make it more standard for you. Okay? So what are the problems that you face? What are the things that are holding you back? Type it in the chat box. Vocabulary, fluency in English, very good. Akash has written a very nice note. A large part of work in India is done for foreign clients, so it's beneficial to learn English. Very good. Thank you for that observation. Ria says fluency. Very good. Ms. Katot says confidence. Confidence, fluency. Yes, these are the main problems. What else? Okay, vocabulary, fluency, confidence. 3. Okay. Anything else? The very interesting one which says to understand English songs. I like that. To understand English songs is very true, because when we were very young, even we did not understand English songs, you know. Yeah. And we had to keep listening. We are going to come to the listening when we come to the course module. Then you will get the English songs also. Grammar. What about grammar? Accent. Accent को अभी थोड़ा साइड में रख देते हैं, because मैंने आपको बोला हम स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखेंगे. Accent दूसरी चीज है. Okay, so more or less we are there. We understand our challenges, but why do you think we have a problem in confidence? Pauses. Okay, why do you think we have these problems? Let's talk about it. उसके जड़ पे जाते हैं, उसके रूट पे जाते हैं. क्यों ये सब हमारे साथ होता है? ये सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं होता है. ये सब कोई भी नई भाषा सीखते हैं उसमें ये जितनी प्रॉब्लम्स आपको अभी हमने लिख के स्क्रीन पे शेयर करी हैं, ये अगर मैं आज के डेट में फ्रेंच सीखने जाऊं या इटालियन सीखने जाऊं तो ये सारी चीजों का सामना मुझे करना पड़ेगा. अगर आप में से हमें कोई अपने घर में रख ले 6 महीने के लिए, तो हमें भी हिमाचली सीखने में यही समस्याएं आएंगी. तो क्या हम डरेंगे? क्या हम भाग जाएंगे? नहीं. Okay, so these are identical problems faced by all language learners. The first one is lack of environment and exposure. What is environment? You are natives of Himachal Pradesh, the beautiful Himachal Pradesh. Okay, so I reiterate once again that if we come and live in Himachal and we have to speak in Himachali, we are going to have the same problems. Why? Because our parents are not from Himachal Pradesh. We have never heard Himachali language before in our life. हमारे हिमाचली लोगों के साथ हमारी कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, कोई दोस्ती नहीं हुई है. हमें नहीं मालूम उनकी आवाज कैसे होती है या वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है, वो किस वक्त क्या कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है. तो ये सब एनवायरनमेंट होता है. तो ये सब अगर मुझे नहीं मिला तो आपको शायद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मिला पूरी तरह से, शायद आपको अंग्रेजी में ये आपको नहीं मिला होगा. ये आपका हो गया लर्निंग एनवायरनमेंट. It has got nothing to do with your family environment. This is learning environment. So you have not received that proper environment. Environment is rich when you are 100% surrounded by English language. If your teachers, professors speak in English, you are surrounded by English. If your parents speak in English, you're surrounded by English. If you watch television programs in English, you're surrounded by English. If you read English books, you're surrounded by English. If you listen to English songs all the time, you're surrounded by English. So you can create your environment. So environment बनाना आपके हाथ में है. जैसे मैंने अपने लिए हिंदी environment बनाया, आप अपने लिए इंग्लिश का environment बना सकते हैं. Exposure कहाँ से आता है? अपने आप को उस चीज में डाल के. पानी में उतरो और तैरो. ये कौन सा पानी है? सुनने का पानी, बोलने का पानी, लिखने का पानी, पढ़ने का पानी. पढ़ना मुंह खोल के है, जोर से है. So immerse yourself, give yourself the exposure. If you're just going to do my 10 exercises that I will give you in class and you say I'm in an English course, मैं आपको आज सर्टिफिकेट दे देती हूँ, ये सफलता प्राप्त नहीं होगी.
आप अपने आप को उतारिए। मुझे भी हिंदी में बोलने में थोड़ा थोड़ा संकोच, मैंने सोच के पढ़ा है, संकोच हो रहा है, थोड़ा डर लगता है कि मेरे सामने अच्छे लोग बैठे हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप तक बढ़ने के लिए। तो आप भी टीचर्स की तरफ और अपने एनवायरनमेंट की तरफ बढ़िए, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़िए, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे वहां लिखा है लैंग्वेज इंटरफेरेंस। तो आपको रश्मि मैम ने बताया था, समझाया था कि एक लैंग्वेज 1 है, एक लैंग्वेज 2 है, एक मदर टंग है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो गया नया लैंग्वेज। नया लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आपके केस में इंग्लिश है इस वक्त पे, कल को फ्रेंच भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो लैंग्वेज हम बचपन से सीखते आते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ बोलने का तरीका होता है, उसकी कुछ अपनी वोकैबुलरी होती है, उसकी अपनी कुछ अदा होती है, ठीक है। तो वो हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उससे उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। तो ये इंटरफेरेंस हो गया। मेरे जैसे बहुत सारे जापानी स्टूडेंट थे, उनको मैंने पढ़ाया, अलग अलग कहानियां बहुत हैं मेरे पास। आज चलो आज जापानियों की कहानी सुना देते हैं, एक छोटी सी सुनाते हैं, अभी एक हंसी वाली बाद में सुनाएंगे। तो एक ये जापानी होते थे, तो मैं उनको सिखाती थी कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे में सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो संज्ञा होती है, नाउन या प्रोनाउन होता है ना। जैसे मैं कह दूं कि राहुल, मैंने कह दिया राहुल मेरे बेटे का नाम है, समझ लीजिए। तो राहुल टेक्स स्विमिंग लेसन्स, राहुल स्विमिंग लेसन लेता है। तो ये कहते थे, जापानी कहते थे राहुल स्विमिंग लेसन टेक्स, और उनको इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में जो उनकी क्रिया है, क्रिया की जो जगह है, वर्ड, वो लास्ट में आती है। हिंदी में भी लास्ट में आती है, सोच के देखिए, आपका है हमेशा लास्ट में आता है, इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आता है। तो ये चीजें हम लोगों को सुधारनी है, करेक्ट करनी है, माइंडफुलनेस के साथ, थोड़ी अवेयरनेस के साथ, कि इस चीज पे हमको काम करना है। जब एक गलती हम अपनी पकड़ लेते हैं, गलती तो खैर नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं तो हमें उसमें अपने आप को उतारना है और उसी तरह से करना है। तो इन वजहों से आपको इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा, और इसके सैनिक आप ही हैं, आप ही को इसका सामना करना है। हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको सिखाते जाएंगे, ठीक है। बाकी रह गई गाइडेंस की बात, तो गाइडेंस आपको मिल रही है, स्कूल से भी मिल रही है, SBA से भी मिल रही है। अब हम टीचर्स आपके साथ जुड़ गए हैं तो हमारे साथ भी मिलेगी। इसका आप कितना फायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर है, आप हमें निचोड़ डालिए, उसके बाद आप देखिए आपको कितना मजा आएगा और आप कितना जल्दी सीखेंगे और कितने आनंद से सीखेंगे। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें गाइडेंस नहीं मिली जी, हम तो गांव से आए थे या हम छोटे शहर से आए थे, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे प्रोग्राम के आखिरी में कि जो सेल्फ गाइडेंस से चलते हैं, जिसको मालूम है कि उनको क्या चाहिए और वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसको गाइडेंस प्राप्त होती है। शायद इसीलिए आप भी इस मार्ग पे आज हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो गाइडेंस की चाह है। यू वांट दिस टू हैपन फॉर योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स तभी होता है जब हमको कंटेंट पता नहीं होता किसी भी चीज के बारे में। अगर आपको मैं कहूँ, आपने कोई पिक्चर का नाम बताइए मुझे, कोई से एनी मूवीज नेम, just type the name of any movie, it's not coming, nothing is coming to my mind at the moment. Maybe just say any name. Okay, 3 Idiots, very nice. I like 3 Idiots. Okay, but समझ लीजिए कि मैंने 3 Idiots पिक्चर नहीं देखी है, तो सब लोग ग्रुप में बैठ के 3 Idiots के बारे में बात करें, क्योंकि ये फिल्म लेटेस्ट चली थी। अब मैं हम करूंगी मगर वो और उधर उधर घुमाऊंगी बातों को। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने वो पिक्चर नहीं देखी। उसी तरह से अगर मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं या अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में नहीं उतारा है, अपने स्टडी की जिम्मेवारी नहीं ली है, remember, learning is your responsibility, studying is student responsibility, teacher's responsibility is to teach and watch over the students, but students' responsibility is to study and study diligently and regularly and happily. Okay, your confidence will come automatically. अगर आप जानते हैं आप क्या बात करना चाहते हैं, आपको अपना आइडियाज फ्रेम करने हैं, अपने थॉट्स, अपने विचार फ्रेम करने हैं,
कुछ बोलने के पहले थोड़ा सा सोचना है। हम भी आज सोच के ही बोल रहे हैं, हम भी तैयारी से ही आए हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, लास्ट, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना। ओके, सो लोगों का काम है कहना, क्या वो हंसेंगे? हंसने दो, जितना लोग हंसते हैं तो संसार खुश होता है। आजकल लोग कम हंसते हैं। Children, nobody is going to laugh at you. Take my word for that. Nobody is going to laugh at you. Nobody is going to judge you. People are going to appreciate you for your effort. आप मेहनत करेंगे तो लोग आपकी एफर्ट को देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी, आप कहाँ से आए हैं और आप कैसे बात कर रहे हैं, आप नई नई चीजें सीख रहे हैं। हर दिन अपनी भाषा से, अपनी प्रगति से उनको प्रभावित कीजिए, जो आपके आसपास है, अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, हमें, जहां आप काम करने जा रहे हैं। तो इनहिबिशन छोड़ दीजिए। इनहिबिशन सबसे बड़ी बेड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो आई होप यू आर वेरी फीलिंग रिलैक्स नाउ। लेट्स हैव फन। सारे स्टूडेंट्स टीचर का मजाक उड़ाते हैं, है ना? तो नंबर 2 से शुरू की जाए। है ना? पीछे से हमें मालूम है, हम ऐसे ही इतने साल स्कूलों में नहीं पढ़ाए हैं और प्राइवेट टीचिंग नहीं करी है। हम सबने देखा है कि बट हम अपने स्टूडेंट्स से सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी एक प्यार जताने का तरीका होता है। तो लेट्स लुक एट नंबर 2. Who is going to read for me loud? The first name is going to get the chance. Put your name there. Put your name there. Chetna. Chetna is not a student. She does not get the chance. कोई भी बच्चा अपना नाम लिख दे। Come on, take the chance. Write your name, children. Don't be shy. Arshdeep Kaur, welcome Arshdeep Kaur. Thank you. Come on, read. Arshdeep, please read number 2. Read it aloud. Unmute your microphone and read. Okay, the names are over. Arshdeep Kaur, can you read? Why are you looking the monkeys outside when I am inside? Very good. Excellent. Excellent. तो कौन बंदर अंदर बैठा है? डरो नहीं, ये हंसने का टाइम है। So if I'm the one who's speaking and I'm inside your box, so I'm the monkey inside. So it's just a joke. But thank you, Arshdeep. Thank you. Okay, next name I have Priyanshu. Priyanshu, read the first one. Unmute your mic and go fast. Pick up the paper and throw in the dustbin. Okay, Priyanshu, you picked up the paper. आपने visualize किया, आपने paper उठाया. बात कीजिए मेरे से. Yes, ma'am. अच्छा, तो कौन डस्टबिन में गिरा? Paper. Very good. Good. Very good. Shabash. I like that. Come on, Brinda, go next. Read the third one. Both of you stand together separately. Okay, अब इसका मुझे हिंदी में अनुवाद कीजिए. Ma'am, two person stand together in a separate place. हाँ, अब ये मेरे को हिंदी में पूरा वाक्य बोल के बताइए. दो लोग एक अलग सी जगह में खड़े हुए हैं. हाँ, खड़े हुए नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूंगी. दोनों एक साथ अलग अलग खड़े हो जाएं. It's a command, okay? So this is just for fun, okay? Next, I have Sejal. Come on, Sejal. Next, do the next one. Number 4. Open the window, let the air force come in. हाँ, Air Force आ जाएगा अंदर. खिड़की खोलेंगे तो इसका क्या मतलब था? खिड़की खोलो और हवा को अंदर आने दो. हवा को अंदर आने दो, मगर हवा का प्रवाह बहुत तेज है, तो इसलिए गलती से किसी ने लिख दिया let the Air Force come in. So we really can't say let the military come in or let the Navy come in. That's a joke there. Okay. Next one, हर्ष जी आप आ जाइए. लास्ट वाला मुझे बोल के बताइए. Will you hang the calendar or else I will hang myself? क्या आप लटक जाओगे सच में? हर्ष? Good, you enjoyed. So cheers for everybody who participated. Very nice. We really have a wonderful set of students here. We're going to enjoy our classes together. Very good. So how will this course
help you? ये कैसे आपकी मदद करेगा? आप अंग्रेजी में सोचेंगे, आइडियाज आपके अंग्रेजी में आएंगे. अभी मैंने आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया था, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिमाचली वर्सेस इंग्लिश और हिंदी वर्सेस इंग्लिश और एनी लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश. So now you have to think in English, you have to create your ideas in English. You will learn a lot of vocabulary, क्योंकि vocabulary के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है. जब आपको शब्द का प्रयोग नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आप अलग अलग सिचुएशंस के वोकैबुलरी हमारे साथ सीखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, अपने डेली लाइफ में उतारेंगे उसको. ठीक है? एंड यू विल लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. अ लिटिल बिट ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंफर्टेबल एंड हैप्पी लिविंग एंड वर्किंग. ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं होने वाला है या यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं होने वाला है जहाँ पे इंग्लिश का पूरा टेस्ट होगा, मगर आप इसको कितनी मिठास के साथ और कितनी सहजता के साथ और कितनी ठीक तरीके से बोल पाते हैं, हमारा उद्देश्य ये रहेगा. ओके, यू विल बी एबल टू रीड स्किल्स एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स. यू विल गेट दीज स्किल्स, रीडिंग स्किल्स. तो किताबें खोल के आप जोर से पढ़िए. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आपको अगर बोलना सीखना है, कॉन्फिडेंस डालना है, डर हटाना है, तो आप अपनी कोई भी किताब खोलिए, कोई भी कहानी, उसको जोर से पढ़िए. बच्चों की किताब ले लीजिए, उस पे आप फ्लुएंसी प्राप्त कीजिए और आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये सब आप हमारे साथ करेंगे. आपको जैसे आज आप आगे आके बोले हैं, आप क्लासेस में भी आपको बोलने का बहुत मौका दिया जाएगा. ये क्लास आपके लिए है. 80% आप लोग रहेंगे, 20% टीचर्स करेंगे काम अपना. तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. तो ये एक बहुत स्पेशल हमने इंटीग्रेट करा है. ये we've integrated verbal and non-verbal communication because it's not only words that are going to create communication. How you feel, how you think, what you want, what you don't want. You have to express your likes, dislikes, your body language, your demeanor, your personality is going to be shaped even by learning the non-verbal communication, which is a very, very important part of learning. तो हम इंग्लिश के साथ साथ आपको ये दे रहे हैं. अगर हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा. तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको होलिस्टिक बनाने के लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी डालेंगे. अगर मैं आपको अभी घूर दूं और कुछ ना कहूं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं शायद थोड़ी गुस्से में हूं या थक गई हूं या कुछ भी आप सोच सकते हैं मेरे बारे में, लेकिन मेरे चेहरे से कुछ तो मैंने कम्युनिकेट किया. I communicated something. So when you're able to integrate your verbal and your non-verbal communication both, you will automatically gain confidence, fluency. You will overcome all your fears and your inhibitions. Okay, let's go to the next slide. Thank you. So we've divided the learning program into maybe 3 or 4 sections. We are going to do a foundation course at the moment, which is the basic. So it does not mean language ego नहीं रखना है किसी को, क्योंकि second learners के पास हमेशा language ego होता है कि ये तो हमने पहले पढ़ा था स्कूल में, अब हम आए हैं तो हम अपनी स्लेट खाली करके आएंगे. ठीक है? तो हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशन कोर्स से, जो कि 6 महीने के लिए हम चलाएंगे. एंड उसके बाद हम आपको मीडियम लेवल पे ले जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड देन मे बी एडवांस लेवल. वी विल डू दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी एन ongoing program. Okay, so this is what you are going to learn. 3 persons in English language, subject, verb, object. This will be given to you, so I don't have to read it out. We can just move to the next slide. Okay, so the classes are not going to end only with the classes. You are going to get handouts, which are worksheets. You are going to listen to audio and video presentations, which we are going to just share now. There's a website for it. There will be webinars coming up, presentations coming up. तो ये presentations बहुत अच्छी चीज होती है, webinars बहुत अच्छी चीजें होती हैं. बहुत अच्छा करिकुलम में आपको इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये बनाया है. चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो ना हो, आप अपने आप को उसमें उतारिए. आपको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, आप उसका फायदा उठाइए. तो ये अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं. This is a typical worksheet that you will get. So some of it will be worked upon at class and some of it will be worked upon at home. You are expected to answer this and you have to give it to your teacher. We are going to make separate groups. We are going to talk about that later. Okay, but this is a typical worksheet which will be given to you. So ideally, you should either print it out before the class, 2 days before the class, this will be shared with you, or you make a separate notebook. एक अलग notebook बनाइए जिसमें आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 डेट के साथ लिख के इसको पहले ही उतार लीजिए.
शायद सारे बच्चे प्रिंट नहीं कर पाएंगे, तो आप इस जो हम आपको देंगे ईमेल से आपके पास आएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ताकि जब आप क्लास में बैठें तो आप अपना पेन पेंसिल और ये शीट या अपनी नोटबुक लेके बैठें, खाली हाथ ना आ जाएं, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो आप अपने असाइनमेंट जरूर करेंगे। सारे वीडियोस, ये एक सैंपल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस और भी डाले जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड है आपकी लर्निंग के साथ, ये अलग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोनाली जी, वी लेट देम हियर इट नाउ। The hummingbird. The hummingbird is an interesting bird to observe because of its unusual behavior. It is the only bird that can fly backwards. It can also fly up, down, left, right. So this was just a sample, and you are expected to do your homework, do your assignments, do your learning. Okay, and please remember that there will be absolutely no repetition of classes. अगर आज सैटरडे है, हमने आज कुछ पढ़ाया है, तो अगले सैटरडे टीचर सिर्फ उसको 5 मिनट का रिकैप करेंगे जो पिछली बारी पढ़ाया है। अगर कोई मिसिंग लिंक है तो वो आपको बताया जाएगा दोबारा से, मगर पूरी क्लास नहीं दोहराई जाएगी। इससे टीचर का टाइम वेस्ट होता है और बाकी बच्चे जो बैठे हैं, जो काम करके आए हैं, उनका भी समय जाता है। So we have to keep that respectful behavior towards each other and attitude towards each other. Okay, please join your class on time. Please inculcate discipline, and we require 100% attendance. If you really want to do well, we would love to see you every Saturday. But there's a course completion certificate which we are going to award to you, and for that you will need at least 90% attendance. Please remember, we will be your teachers. We've always taken attendance, and we will be taking attendance this time also. Okay, so once you've registered for the course, you'll be required to abide by all the rules laid down by the class teacher. यही सारी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं about the notebook. Classes will not be repeated, about the course completion certificate, about doing your assignments and your practice tests. Some things will be coming to you. उस टेस्ट से डरना नहीं है, अपने आप को ये चैलेंज देना है। Okay, and please join at the exact time. Please keep it on priority. Saturday 4:30 बजे के पहले ही, 5-10 मिनट पहले ही आपको अपने फोन के पास बैठ जाना है। आप अपने घर वालों को कहिए, बहन भाइयों को कहिए कि आप मेरे को 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये मेरा वक्त है, मेरे पढ़ने का वक्त है। Please keep it on priority, and teachers will really appreciate if you can do that. Please don't join late. Okay, so to conclude, and before I hand over to Shonali, I mean, yesterday I read my favorite author's blog. मेरे एक बहुत ही प्रिय लेखक हैं, तो उनके ब्लॉग से मैंने 2 लाइनें निकाली जो मुझे बहुत प्रभावित करी. I was very impressed, and it is in context with all the students and with all of us too. So with your permission, may I read it out to you? Okay. So my favorite author, Om Swami, who is also a great teacher, he says in his blog, be clear about your priorities, and consequently you invest every ounce of energy into things that matter. Are the ordinary ones that go just a little bit further. Okay, so good luck, and looking forward to our sessions together, and Shonali ji will take you through the rest of the program. Thank you. थैंक यू मंजुला जी, एंड इट वाज रियली एनलाइटनिंग। हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे आज पता चला कि आपको हिंदी वापस सीखने में उतनी मुश्किल हुई जैसे कि किसी को एक नई लैंग्वेज दूसरी सीखने में। यहाँ पे बच्चे हैं, जैसे मैं संस्कृत सीखने का सोच रही हूँ, तो शायद मुझे ये सारी समस्या आएंगी। थैंक यू सो मच। और अब मैं ये सेशन बच्चों के लिए ओपन कर रही हूँ। आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिलेटेड, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा भी है, उन सवालों के हम जवाब देने के लिए यहाँ हैं। जो भी सवाल है आप या तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, या फिर आप उन सवालों को यहाँ पे लिख दीजिए। एक बच्चे ने लिखा है, जिन बच्चों के पास कॉलेज में परमिशन नहीं है फोन ले जाने की, तो क्या करेंगे? ओके, गांधाली जी लिख रही हैं कि वी कैन टेक परमिशन फ्रॉम योर कॉलेज, यू विल बी गिवन योर फोन्स फॉर द सेशन। सिर्फ हफ्ते में एक दिन 45 मिनट की बात है बच्चे। सो आई थिंक ये वर्कआउट किया जा सकता है कि 45 मिनट के लिए आप सैटरडे को, स्पेशली जहां तक हमें आइडिया, आपकी क्लासेस 4 बजे खत्म हो जाती हैं शायद, है ना? तो ये चीज वर्कआउट हो जाएगी मेरे ख्याल से, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम नहीं देंगे, मैम हमें नोट्स कब तक मिलेंगे? ओके, मंजुला जी इसका जवाब आप देंगी कि हम इन्हें नोट्स दे रहे हैं या नहीं?
आप म्यूट हैं। नहीं, नोट्स हम इनको जरूर देंगे। स्टूडेंट्स को हम टिपिकली नोट्स 2 या 3 दिन पहले ईमेल से आएगा, तो आप अपने ईमेल जरूर चेक करें। अगर हमारी क्लास अभी समझ लीजिए 18 से शायद हम शुरू करेंगे, तो हम 15 तारीख तक आपको ये ईमेल से आपको ये PDF आपके पास आ जाएगा। या तो आप इसकी फोटोकॉपी करवा लें या आप इसको लिख के अपने आप रेडी रख लें, ठीक है। और ये टाइमिंग के बारे में सब बच्चे जो कह रहे हैं, ये 6 मंथ्स का कोर्स है, दिसंबर तक चलेगा। तो क्लास की टाइमिंग्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है। 18 जून से पहले क्लास स्टार्ट होगी। आज 5 जून है। हर सैटरडे को शाम 4:30 से 5:15 बजे हम लोग क्लासेस लेंगे। आपको आप किस क्लास में होंगे, किस टीचर के साथ होंगे, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन पहले ही शेयर कर दी जाएगी, और आपको जो गूगल मीट का या जूम जो भी होगा प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का लिंक भी दे दिया जाएगा। 4:30 क्लास ओवर होती है। क्लास ओवर होते ही फटाक से क्लास ज्वाइन कर लेना पूनम, कोई दिक्कत नहीं है, फोन हाथ में ही होता है। अगर बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी तो हम 15 मिनट आगे सबका देखकर एक बार फिर हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे टाइम का। इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि पर्पस ये है कि आपको सिखाना है हमें। तो अगर आप लोगों की 4:30 क्लास ओवर होती तो हम 4:45 का टाइम रख लेंगे, ठीक है। ये आपकी जो भी समस्या है, ये आप अपने मेंटर्स के साथ शेयर कर दीजिए, या जो अभी एक ग्रुप बना है अपना जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे हैं, एक कॉमन ग्रुप में आप अपनी ऐसी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उन्हें शेयर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे उस पर डिस्कशन करके और फिर आगे डिसाइड कर लेंगे कि किस क्या टाइम होगा। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। हर्ष रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। 3-4 क्लासेस जब तक हो नहीं जाएंगे, उसके बाद अगर मान ली जब 4th क्लास कंप्लीट होगी, उसके बाद 1st क्लास की रिकॉर्डिंग हम अपने SBA के चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप ये सोचो कि मैं तो मस्ती कर लेता हूँ और मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा रात को सोते वक्त, ये नहीं। देखो, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं है जो हम आपस में बातचीत करके कर सकते हैं ना। तो रिकॉर्डिंग में आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास अटेंड कीजिए। लाइव क्लास में हम इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। वही एक की है, वही एक जादू की चाबी है जिससे आपकी इंग्लिश सुधरेगी। जब हम लाइव क्लास में इंटरेक्शन करेंगे ना आपसे, वही वहां पे मजा आएगा। कैन आई स्किप सेशन ड्यूरिंग एग्जाम? बच्चे ये सारे अभी से क्लास स्टार्ट हुई नहीं, बहाने शुरू हो गए। चेतना मैम कह रहे हैं कि डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मालूम नहीं होता, बच्चा कभी नहीं चल पाए, रिकॉर्ड नहीं हो पाए टाइम पे। कई बार हो सकता है कि टीचर क्लास रिकॉर्ड करना ही भूल जाए अपनी, है ना। तो डोंट डिपेंड ऐसा बैकअप उसे लेके कि बाद में कर लेंगे, नहीं। मेक अ पॉइंट, जैसे और क्लासेस अटेंड करते हो लाइव क्लासेस पे आओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी वांट टू से। और कोई भी क्वेश्चंस हैं वो रख दीजिए, बिकॉज अब टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक इंस्पिरेशन के तौर पे एक लड़की है, अब वो आप ही की उम्र की है, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तब ये जो मैं अब आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, तब वो छोटी थी, 13-14 साल की थी, लेकिन अब वो आपकी उम्र की है और उन्होंने कैसे इंग्लिश सीखी एक मिसाल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे टीचर्स और मेंटर्स पढ़ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप उसमें भी नोट कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे सबके सवाल देने में बहुत फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप वहां डाल दीजिएगा। विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया, मैं एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, गिव मी अ सेकेंड, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान और BBC लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जानवी के बारे में बात बता दूं आपको कि ये 8 अलग अलग फॉरेन एक्सेंट्स में बात कर सकती हैं, और ये अभी 13 साल की हैं, और लेकिन BA फर्स्ट ईयर में है, यानी वो 12वीं क्लास भी पास कर चुकी हैं। लेकिन मैं उनसे सबसे पहले बात जानना चाहूंगी कि जानवी, आप कौन कौन से एक्सेंट में बात कर सकती हैं? British, American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk. ओके, ये एक्सेंट ऐसे थे जिनमें आधे के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कैसे कैसे एक्सेंट है। लेकिन आपने ये सब सीखा कैसे? ये मैंने नेट से सीखा। नेट से सीखा, ओके। आप मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सकती हैं, राइट? तो आप हमारे साथ जेम्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगी जो या जेम्स, अब आप उनसे बात करके दिखाइए, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। Okay. I can't understand Hindi, but I believe you can understand British. I can understand British. You can do English. Oh, that's a very good British accent. Thank you so much. Carry on then. Thank you. So, have you met the Queen?
No, I haven't met the Queen, but I'd really want to meet her. You want to meet the Queen? Can you do any other accents as well then? Yeah, I do American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian. Oh, let me hear the Australian one. That's actually, I love this accent the most because it's a little type of fast and we use so many of the slang, so I think it's the most business I've ever seen. Like, start off becomes start out, comfortable becomes comfy, so I love this accent a lot. And you just don't stop talking in it either, do you? And you can do Scottish? I can do Scottish because I love that that type of, because I love that one. Hey, twirling your tongue? Oh, okay. I'm not even going to try it much. Just like I wouldn't try an Indian accent either. Scottish accent? I know a bit of the Scottish accent, yes, obviously. I hear quite a lot of it back in Britain. And what do you think about the American accent? I like the American accent. I like it. There's so many different American accents, though. There's the Deep South. Accent, but I use the simple one, where they just roll their tongue while speaking the R, where their T becomes D, when it's between R and Y. So I love this accent a lot. So how many accents do you do? I speak 8 accents. 8? That's pretty amazing. Thank you so much. थैंक यू जेम्स। Thank you very much. और एक बात मैं बता दूं कि जो जानवी हैं वो हरियाणा में पानीपत जिले के एक समालखा गांव से बिलोंग करती हैं। या समालखा इज अ टाउन, ओके। तो जानवी आप हरियाणा से है, तो आप हरियाणवी आती है आपको बोली? आती है। तो बोल के दिखाओ। आपको भी तो आती है, आप भी बोलो। हाँ, मैं बोल के दिखाऊंगी। पहले आप बताओ कि अच्छा, आप अगर आपको कुछ बात बतानी है कि बीबीसी की न्यूज आप हिंदी में पढ़ के बताइए। नहीं, हरियाणवी में। बीबीसी की न्यूज हरियाणवी में? हम बात करते हैं ना हरियाणवी में। तो कौन सी क्लास में पढ़ो आप? बीए फर्स्ट ईयर में। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़े, तो आपके क्लास में और भी जो भी छोरी हैं वे भी और हरियाणवी में बात करती हैं? को ना करती, वे तो सारी दिल्ली की हैं, हरियाणा की कोई सी को नहीं। तो दिल्ली की छोरी क्यों कर बात करा करे? हिंदी में। हिंदी में? और क्या स्टाइल में, क्यों स्टाइल में बात करा करे? नो दिखावा वही है सब कुछ, और कोई सा कोई है ही नहीं। यस, ये जो हमने वीडियो दिखाया है, इस गर्ल को वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है और उनका नाम है जानवी पवार। और इन्होंने ऐसे ही शुरुआत की थी कि बस शौक था कि इंग्लिश सीखनी है। इंटरनेट के थ्रू इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया और पहले बेसिक इंग्लिश सीखी, उसके बाद इन्होंने इतने तरह के एक्सेंट सीखे। और अगर आज आप इन्हें सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये इंग्लिश पढ़ाती हैं बड़े बड़े लोगों को, आईएएस ऑफिसर्स की मोटिवेशन क्लास लेती हैं, उनको इंस्पायर करती है। और अपना पूरा इनका यूट्यूब चैनल है जानवी पवार वंडर गर्ल के नाम से। तो ये देख के हमें ऐसा लगता है कि देखिए, कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं है अगर हम कुछ करना चाहते हैं। और भाषा तो बहुत ही आसान काम है करने के लिए, बहुत आसान है सीखने के लिए। तो ये एक लड़की है जिसको हम इंस्पिरेशन के तौर पर ले सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकता, हर कोई सीख सकता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, डरिएगा मत, और गलती हो जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि मैं आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक टीचर से कोई बात कर रहा है कि आर यू द न्यू इंग्लिश टीचर, तो टीचर कहती है यस आई आर। तो टीचर भी गलती करते हैं बच्चों, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टीचर भी गलती करते हैं, गलती हम ह्यूमंस की बेसिक उसमें आती है, गलती सब करते हैं। आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी, आप स्टूडेंट है, मैं आपसे सीखूंगी, मैं टीचर हूं, आप मुझसे सीखेंगे। तो हम एक म्यूचुअल, जैसे हमने स्टार्ट किया था, लेट्स लर्न टुगेदर, हम साथ चलेंगे, साथ सीखेंगे, साथ बढ़ेंगे। तो अगले 6 महीने हम उम्मीद करते हैं कि आप हर क्लास में आएंगे, तकरीबन 24 क्लासेस होंगी। और 6 महीने बाद देखते हैं अपन कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। और मैं इस समय बाकी सारी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी, कोर टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी, और जो SBA के सारी लीड टीम है उसको थैंक यू बोलती हूँ। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। Thank you so much for being with us and thank you for your precious 1 hour that you have given us. I hope आप लोगों ने हमसे कुछ सीखा है। और कितने लोग एक्साइटेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? जल्दी से अपने हाथ उठा दीजिए, फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ। जल्दी से हैंड्स अप करिए। और एक बार जितने लोग वीडियो पे आ जाएंगे तो इतना बढ़िया होगा कि मैं एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओ, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ खड़े हो गए हैं। दिस इज सुपर, आई एम लाइकिंग इट। चलिए, और कितने लोग तुरंत वीडियो ऑन कर सकते हैं? एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आशुतोष जी ले लेंगे, मैं ले लूंगी। जितने लोग मैक्सिमम वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। 3 screens, Shonali. You have to take all 3. हाँ, I'll take, पर सब ऑन करें वीडियो। Yes, I can see कल्पना। आइए, let's see। ये क्या हुआ? म्यूट कर, तो मैं एक बार सबको कर रही हूँ। और आ गए सब लोग ऑनलाइन?
Are we here? आशुतोष जी एक स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी सब भी ले लेंगे. Sonali, you go ahead and take the pictures. I have taken one picture and I'll use it and paste it. And in the meantime, let me take one. Okay. Huh. Okay, smile. Okay, I got one. I'll take another one. Last screen, a lot of people don't have their videos Yes. on. First screen में दिखते हैं सारे videos on, right? चलिए हमेशा backbencher वाला है ना. But I can see a lot of students and this is so wonderful to see all of you. चलिए. Thank you. Smiling away. Yeah. Oh yes. चलिए. Thank you Manjula ji and the whole team of teachers, Ashutosh ji, Ravi ji, Sujata ji and whoever, Namita ji. I can't see all of you, but thank you all and thank you students for being here. Thank you SBA. Thank you. Soon. Thank you. Namaskar.